Yeah. Chaliye, Abdul Hamid, Siddiqa, Harsha, all of you, please turn your cameras on. We will start the class. In the last lecture, we learned a new relationship, that is delta H naught of any reaction. It is equal to the delta H naught bond enthalpy of reactants minus the delta H naught bond enthalpy. Okay, Harsha, of the products. Okay. And this is the relationship that we learned in the last lecture. Now, please write the question. Calculate the H naught reaction of the following. Calculate the enthalpy, standard enthalpy of reaction of the following equation. The following reaction using given data. So they have given carbon, double bond carbon, and it has 2 hydrogens. Okay. Please remember that they will not give you this whole structure. They will just give you C2H4. Okay, they are going to give you C2H4 plus O2. Gives you 2 carbon dioxide and 2 moles of water. And 2 moles of water. Okay. So it is basically ethene reacts with oxygen to give you carbon dioxide and water. Now, in this case, they are given you some data. The data that they have given is the different types of bond that is present here. We have the carbon and hydrogen single bond. We have oxygen double bond. Then we have carbon double bond. And then we have carbon and oxygen double bond. Then we have oxygen and hydrogen single bond. Okay, so these are the different bonds that we have in this particular. These are the different bonds, and their bond dissociation enthalpy is given. Rather, I should write this is their delta H naught bond. Okay. So the delta H naught bond or the enthalpy of the bond dissociation enthalpy जो दिया हुआ है, CH for it is given as 414. This is 499. This is 619, 724, and 460. All of these values are in kilojoule per mole. All of these values are in kilojoule per mole. Okay? And they're asking you, they have given this data, and they're asking you to calculate the enthalpy of reaction for this particular equation. यहाँ पे एक बार balance कर लीजिएगा, please. If you see oxygen atom, here we have 4 and here we have 2, that is 6. So here we have 3 oxygen atoms. चलिए. Please write this down. You'll see how to do this question. It's based on the relationship that we did yesterday. This is the relationship. Okay, I'm waiting. Mariam, Siddiqa, Martin, please turn your cameras on. Please turn your videos on quickly. Thank you, Martin. Siddiqa and Mariam. Yes, sir. 1 minute. And raise your hand once you're done writing the question. Raise your hand once you're done writing the question.
Waiting for Martin and Mariam. Raise your hand once you're done. Martin, done? Yes. Yeah, I already raised my hand. Your hand is not raised. Why? Keep your hand raised once you're done. Okay, chaliye. Now, please see all of you guys. In this question, first of all, the very first thing that you have to do is you have to identify the different types of bond that we have. Okay, different types of bond we have. Now, for this particular part, I have shown explicitly what are the bonds, but in the question, you will be not given that much explicitly. And similarly, in for the case of O2, so what type of bond does oxygen have? Tell me. Oxygen and oxygen. There are two oxygen atoms. So what is the bond between the oxygen atoms? Double bond, single bond, triple bond. क्या होता है? Double bond. What bond? Sorry, Mariam. Double bond. Double bond, right? Yeah. See, here we have double bond. Similarly, what is the structure of carbon dioxide? What type of bonds do we have? We have carbon in the middle and oxygen in the sides. So what is the bond with the oxygen atom with carbon, oxygen, and carbon? How are they bonded? Double bond, single bond, triple bond? Guys, tell me. Yes, Abdul Hamid. Here also we have what? Here also we have double bond. What is the structure of H2O? H2O has a structure like this. All of you got this? Yes or no? Please tell me. ठीक है? अब ध्यान दीजिए जरा. How many moles of oxygen we have? 3 moles. How many moles of carbon dioxide? 2 moles. How many moles of water? 2 moles of water. ठीक है? Now, the most important thing that you have to see here, what are the reactants and products? So you'll write here delta H naught R, it is equal to, first of all, write delta H naught bond enthalpy of reactant minus the delta H naught bond enthalpy of the product. So whatever the type of bond is present in the reactant minus the bond in product. Please don't write, just listen right now and see. आराम से देखिए बिल्कुल ठीक है ना. उसके बाद लिखिएगा, अभी कुछ मत लिखिए प्लीज. ध्यान दीजिए बस. Now, tell me, how many CH bonds do we have? Reaction में देखिए. First of all, tell me guys, all of you, where do we have CH bond in the reactant or product? पहले बताइए. Where do we have the CH bond? Reactant or product? Reactant. We have that in the reactant, right? How many? Tell me guys, how many CH bond do we have in the reactant? In the chat, please tell me guys. Chat में बताइए, how many CH bonds do we have in the reactant? I think you guys can answer, no? Yes, Harsha, very good, correct. Mariam, Siddika, Hamid, Martin, अरे यार काउंट करना है बस. कुछ नंबर तो बताओ, कितने CH बॉन्ड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ काउंट करके तो बताओ. Yes, Siddika correct, Mariam correct. No, Martin. How it is 2? देखिए.
one CH bond, another CH bond, two CH bond, three CH bond, and four CH bond. How many bonds do we have? CH bonds. We have four CH bond. So we will write 4 multiplied by 414. Correct? All of you got this? Yes or no? Please tell me. अब ध्यान से देखिए, लिखना नहीं है, अभी सुनिए. Reactant हो the where do we have double bond O? Oxygen double bond O. Reactant or product? Reactant or product? Reactant. Reactant. And how many do we have? How many OO bonds do we have? Tell me, guys. O double bond O. How many? Three. Yeah, very good. See, here we have in one oxygen molecule, I have only one double bond O, but we have 3 moles of such bonds, right? We have 3 moles of such bonds. That is why what are we going to do? We are going to do 3 multiplied by 499. Now tell me C double bond C, where do we have it? Reactant or product? Where do we have the C double bond C? Reactant or product? Reactant. Reactant. How many? One. One. Very good. So we will write here C double bond C is 619, 619. This is the complete thing regarding the reactants we are done. So, okay, all the bonds are completed. Minus. Please see, where do we have C double bond O? Reactant or product? Product. Product. How many do we have? Two. Two. 2. No, see here. In carbon dioxide, this is 1. This is another. Right? And so in one molecule, we have 2 CO bonds. So in 2 molecules, we will have 4 CO bond. Makes sense? Yes or no? Please tell me. Yes. ठीक है? So we'll have 4 multiplied by 724. देखिए, बहुत जरूरी है सुनना. Writing is not important. Otherwise, बाद में बहुत दिक्कत होगी. If you are just writing, it will be very difficult. Okay, so we have 2 CO bonds in carbon dioxide, and we have 2 carbon dioxide molecules. That's why it will be 4. Then plus, we have this OH. Where do we have the OH bond? Reactant or product? Product. Product. How many OH bonds? 4. Four. Very good. 4 multiplied by 460. ठीक है? So you calculate this whole thing. You will multiply this, add this. You will multiply these numbers, then add this, and then subtract the whole thing. I will give you guys 2 minutes for this. You just need to copy it down, है ना? अभी तो आपने समझ लिया. And calculate if you can. Write it quickly. Write it quickly. चलिए. Guys, time is over.
you calculate this, you will get this value as minus 964 kilojoule per mole. Okay. So where this kilojoule per mole came, because all the units were in kilojoule per mole, obviously addition and subtraction, all of these things will give you kilojoule per mole only. Okay. So please write this down. Delta H naught R is minus 964 kilojoule per mole. This was the important bit. After that, you just needed mathematics of class 8 standard or 7 standard, nothing else. ठीक है. इसके बाद आपके पास यहाँ तक 11th standard है. ठीक है. Till here you have the 11th standard till here. After that it is maths and not even chemistry anymore. ठीक है. चलिए. All of you understood how to do these type of questions? Yes or no? Please tell me. ठीक है. चलिए. Moving on. Please see guys. Next. Write lattice enthalpy. Lattice enthalpy. If you remember lattice enthalpy, we have seen this word when we were doing the chemical bonding chapter. In that we had this lattice enthalpy word. Now, what is lattice enthalpy? Please write the enthalpy change. The enthalpy change when 1 mole of an ionic, when 1 mole of an ionic compound dissociates into its ions in gaseous state. Basically, what they're saying, if I take an example of NaCl, then in solid state, we have to give it the energy so that it gets converted into its ion. So what are the ions? Na positive in the gaseous state and Cl negative in the gaseous state. Okay. So you have to give the energy. So whatever energy is required for this type of transition or transformation, that is known as delta H naught of lattice. That is the lattice enthalpy. When you break, this is important, 1 mole of an ionic compound, 1 mole of an ionic compound. Okay. Now, we have learned many enthalpies. Okay. We have learned many enthalpies and we will try to use whatever enthalpies we have done. And we will try to come up with this as a target reaction. Agar aapko last class yaad ho, then if you remember the concept of target reaction, we use the given data and get into target reaction, right? So we are going to use whatever data, whatever enthalpies definitions we have taken, and we are going to convert and get this as the target. Now, please see here, guys. We can go any way around. Please see here, guys. From NaCl, I have to go to what? I have to go to Na plus or Cl negative. I will start with, please see, I will start with, see here, okay, please see, don't write anything, please don't write anything. If I want to form NaCl, then I have to use Na, which is in solid state, that is its elemental state, and I have to use half of Cl2 gas. I have to use half of Cl2 gas in order to get NaCl, which will be in solid state. This is the enthalpy of formation. Ye aapko samajh mein aa raha hai? This is what this is, delta H naught F. बात सही है? Yes or no? Please tell me, guys. Clear है? ठीक है. और जी समझिए, if I convert this sodium, which is in solid state, to sodium in gaseous state, then this is nothing but I am going from solid to gas. That is delta H naught of sublimation that we did yesterday. From solid to gas. देखिए पेज पलट के देखिए, लास्ट ही टॉपिक है बिल्कुल. Some physical transformation, उसमें liquid से solid से liquid fusion, liquid से gas vaporization, solid से gas sublimation. This is sublimation, nothing else. Now, if I remove one electron from sodium in gaseous state, अब ध्यान सुनिए बिल्कुल. If you remember something, the energy required to remove an electron from neutral, isolated, gaseous atom. You remember this? Chapter 3 periodic classification. If you remember chapter 3 periodic classification of elements,
In that we have defined something which is known as ionization enthalpy. We have defined something that is known as ionization enthalpy. That's also a type of enthalpy, right? That's also a type of enthalpy. What is ionization enthalpy? And this is successive, usse pehle, the energy required to remove most loosely bound electron from a neutral, isolated, gaseous atom is called ionization enthalpy. So when I am removing an electron from the sodium, which is in gaseous state, and obviously if something is in gaseous state, it is not surrounded by any of the atoms. Na, agar samne atoms rahenge, then it is solid state. But if you remove the atoms and we have atoms somewhere here, then also it is liquid state. But in gaseous state, the atoms are so far apart that they don't influence each other. That is the meaning of gas, है ना? उनके बीच में कोई force of attraction है नहीं. So that is why it is isolated. It is अकेला. Isolated means अकेला. So if I remove one electron, I will get Na positive in gaseous state. तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? This is delta H ionization. अरे बात समझ में आई सबको? हाँ या ना जल्दी बताएं. यहाँ तक समझ आया? Na positive. अब देखिए इधर. If I go similarly from half Cl to half Cl से हम जाते हैं, मान लीजिए go bit like this. इसको थोड़ा नीचे करो भाई, इधर आ जाओ और थोड़ा छोटा भी हो जाओ, ज्यादा बड़ा है. See here. Now if I go from Cl2 and I just want to break. अच्छा एक बात बताइए. In this, if I take Cl and Cl, so we have what? Half moles of Cl bonds. दिख रहा है सबको? आया ना? Half moles of Cl bond. That is very good. So I will break this and I will get Cl gas. I am breaking the Cl bond. तो क्या हो गया? Delta H naught of Cl divided by 2. Why divided by 2? If I take enthalpy of the bond dissociation, enthalpy of chlorine, then I have to take for 1 mole of bond. But since we have half mole, we are dividing by 2. ठीक है. Now let us move. What other enthalpies do we know? We know an enthalpy. If I want to gain electron, then I have to put delta HEG, electron gain enthalpy. And I will get Cl negative gas. बात समझ में आई सबको? हाँ या ना जल्दी बताएं. ठीक है. अब अगर आप ध्यान से देखें, I have to go from NaCl to here. ऐसे जाना ना? This is my target. Can you see the target now? NaCl solid getting converted to Na plus gas and Cl negative gas. And this particular, this NaCl, this arrow will be represented by delta H naught lattice. बात सही है? All of you understood this, yes or no till here? अब देखिए ध्यान से बिल्कुल. Now what I can say that delta H naught lattice, अगर हम इसकी बात करें, तो delta H naught lattice will be equal to, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर where will we start from? We are going from delta NaCl, Cl negative and Na positive, this reactant यहाँ पे प्रोडक्ट है. ठीक है, चलिए यहाँ से आते हैं आपके पास. सबसे पहले आप लोग आ जाइए, let us go from here. ठीक है, NaCl. If I go from this way, अच्छा एक चीज आप लोग याद है, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन याद है? स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन याद है? नहीं याद है? नहीं. State function, path function, that is the first class. What is state function? A state function depends only on the initial and final state. अगर हम यहां से चले, if I start from NaCl and I travel all these way and I reach here, or I reach using lattice enthalpy. So there are two ways of reaching Na plus and Cl negative. I go this way or that way. Both of these are going to have the same kind of energy because we are starting from the same reactant and ending at the same product. ठीक है. So that delta H lattice I can write. अगर हम यहाँ पे जाएं, देखिए, if I go this way around, backwards जाते हैं हम, जरा इसको हाफ Cl2 यहाँ से हटा दें. देखिए ऐसे उल्टा गए तो डेल्टा H नॉट F का क्या हो जाएगा? I am going opposite in the direction of delta H naught F, so I will have to take minus of NaCl. ठीक है, अब इधर आ गए हम लोग, है ना? So we have got Na solid and Cl2 gas. अब उसके बाद if I just follow the
Na path, I am going this way. So I will write plus delta H naught sublimation of Na solid. Then I will go this way. So I am in the direction, same direction. So I will add this delta H ionization of Na, which is gaseous state. Okay. Then I will move on to the chlorine one. I will go to from Cl to Cl. This will be what? Delta H naught of Cl divided by 2. Then I will go from Cl gas to Cl negative. Then I will write plus delta Heg of what? Of Cl. So this whole things, the addition of all of these whole things will be equal to delta H naught. That is because we are starting from the same point and ending at same point. इसको अगर थोड़ा सा खूबसूरत तरीके से अगर हम लिख दें यहाँ पे, so I will write this as delta H naught Eg of Cl plus delta H naught Cl bond divided by 2 plus delta Hi of sodium plus I will write delta H naught sublimation of sodium. Then what I will write? I will just minus the delta H naught F of NaCl. Delta H naught F of NaCl. Okay, this is what? This is delta H naught lattice. Actually, इसको लिखिए फिर हम इसके बारे में दिखाते हैं. Like, why have we got all of these things here?
All of you done? सबने लिख लिया? No, not done. No. Okay. Then guys, Yes, sir. चलिए अब थोड़ा समझते हैं कि भाई इतने बड़े ये क्या फॉर्मूला है, क्या है ये इतना, ये क्या याद करना पड़ेगा और ये है क्यों, जब दिस होल थिंग इज इक्वल टू दिस वेरी स्मॉल थिंग, तो ये है क्यों, ध्यान रखिए ऑल ऑफ यू प्लीज लिसन वेरी केयरफुली. इट्स इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू realize the importance of these type of big formulas. Okay, so we are calculating the enthalpy, like lattice enthalpy of what? NaCl. ठीक है. This is for NaCl, right? This is NaCl, a salt that we all know. ठीक है ना, like what the compound is, right? And also like it's very, I mean you are very much aware of NaCl, that is why आपको लग रहा है क्यों ये कर रहे हैं. But please remember that all the ionic compounds जो भी दुनिया में हैं, like whatever ionic compounds you have, मे भी बहुत सारी चीजों के बारे में आप नहीं जानते होंगे, है ना. बट आप देखिए यहाँ पे दिस पर्टिकुलर वैल्यू इट इज ऑफ मॉलिक्यूल और एटम. ये एलिमेंट के लिए है या फिर किसी कंपाउंड के लिए है, बताइए. दिस इज फॉर, अरे बोलो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होगा एटम के लिए या फिर मॉलिक्यूल के लिए, किसके लिए होगा? एलिमेंट के लिए या मॉलिक्यूल के लिए, कंपाउंड के लिए? Tell me, Mariam. Electron gain enthalpy will be for a compound or an atom or molecule? Atom या element? ये बताइए. It will be for compound. और electron gain enthalpy compound के लिए होगा या element के लिए होगा? Element के लिए. Very good. Similarly, Cl. So you can see it is what? Bond dissociation enthalpy of Cl2. Cl2 भी क्या है? क्लोरीन की एलिमेंटल स्टेट. इट इज द एलिमेंटल स्टेट ऑफ क्लोरीन. व्हाट अबाउट सोडियम? इट इज अगेन एलिमेंट. व्हाट इज डेल्टा X सब्लिमेशन? इट इज अगेन फॉर एलिमेंट. समझ में आ गया आपको सबको? ऑल यू अंडरस्टैंड दैट? यस और नो, प्लीज टेल मी. नाउ दिस इज द मोस्ट बेसिक एंथैल्पी दैट यू कैन हैव फॉर अ कंपाउंड. अगर कोई कंपाउंड बना है उसकी फॉर्मेशन तो होगी ही. ऑल यू गॉट दिस? यस और नो, प्लीज टेल मी. So all of these data that we are having, these are the basic data, जो बहुत ही basic है. This you can get in any, like if you have any of the data booklet, you will get all of these values for elements. Elements के लिए तो सिर्फ आपको you have 118 elements. For those 118 elements, you have to have a table. और compounds तो पता नहीं कितने बन सकते हैं, right? We can have, I don't know how many compounds we can have, right? That is why it is easier tabulate करने के लिए. Also, if I want to determine what is the lattice enthalpy of NaCl, I would have to take 1 mole of NaCl, then I will have to break it and then determine the energy required in breaking 1 mole of NaCl. So for that, I need some data. So not data, I need some substance, that is NaCl. I need a laboratory. But for these things, I will get this in your NCERT book itself. All of these things we have learned in which class? Like we have learned this in the 3rd chapter itself, right? Ionization enthalpy, electron gain enthalpy, sublimation and ionization enthalpy, all of these things. ठीक है? So most of these things are already there in the data.
That is why we use this thing. That is a long formula बोल लीजिए or a long way of calculating the lattice enthalpy. ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद आप लिखिएगा Hess's law. ठीक है, so Hess's law is related to this particular thing. That is why I'm writing here. He's right. You can write it like this. The delta H of a reaction is same whether the reaction occurs in one step or multiple step or multiple steps or multiple steps. ठीक है, what does it mean? Independent of path, therefore it is a state function. All of you done writing? सबने लिख लिया? जल्दी लिखिए, जल्दी. Write these things fast. Done na? Mariam, Siddiqa, Martin, and Abdul Hamid. Harsha, you're done? Yes, Harsha? Is Harsha not here? What happened? Okay. Guys, please see here now. Now we are moving to a very philosophical aspect of thermodynamics. And the question that we want to answer is why anything happens. Okay. When I say why anything happens, I am asking about natural processes which do not, in which we don't have any human interference. For example, if I talk about if you want to see the complete or whatever happens in the universe, there are only two aspects of it. There are only two aspects of it. एक तो सबसे पहला aspect समझिए, मान लीजिए you have a block here, and this is your ground. This is your ground. So if I stop holding it, you pick up your pen, and if you stop holding it, and you remove any human interference, then what will happen? It will fall down. Correct? So why it is falling down? You will say, sir, gravity. You will say gravity, right? But I will say, how it is falling down in terms of energy. If I want to talk about energy, because there are only two things, ना? आपके पास या तो मैटर है, कोई भी चीज होगा तो उसमें मैटर का कुछ इन्वॉल्वमेंट है, या फिर आपके पास एनर्जी है, यहाँ पे कुछ एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट होगा. So how will we look at the change in terms of energy? Also, जब आप ग्रेविटी आंसर दे रहे हैं, you are talking about external thing, ना? अगर हम सिस्टम इसको मान लें, if I am talking about this as a system, तो ग्रेविटी तो उसके सराउंडिंग में आ गया. What change when it is falling down? When it is going from this position, some height h,
And when as it is falling down and it is reaching the ground, what is changing in this particular block? If I have this object which is in h height and it is falling down, so what is the change happening? Can anyone tell me what is the change? Internally क्या change हो रहा है इसमें? Yes, anyone? No. कुछ एक बार बताइए. At this height it will have potential energy. सही है. When it hits the ground, will it have any potential energy? Potential energy I can say will be equal to some number. पॉजिटिव कर ले हम, कुछ पॉजिटिव नंबर. अरे छोड़ो यार, पॉजिटिव हटाओ, कुछ नंबर ही ले लेते हैं. 10 जूल ले लो आप, मान लें, कोई दिक्कत किसी को. And potential energy at this point will be equal to how much? 0 joules. Is this clear? Yes or no? आपने जो जवाब दिया ना, जो आपके दिमाग में जवाब आ रहा है, that is gravity, that is external thing, ना, that is not inside the system. We are observing the object which is at h height. As soon as it is falling down, what change is happening internally in that particular system? That is a change in potential energy only. सही है? तो अब एनर्जी के बेसिस पे हम लोग बात कर सकते हैं. लाइक वी कैन टॉक इन द टर्म्स ऑफ एनर्जी. व्हाई एनीथिंग इज हैपनिंग, व्हाई इज दिस फॉलिंग डाउन? सो वी विल से, इसको पीआई मान लेते हैं हम इनिशियल, इसको मान लेते हैं फाइनल. सो इफ आई टॉक अबाउट द चेंज इन एनर्जी ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्लॉक विल बी इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल. फाइनल इज 0 जूल, initial is 10 joules. So change in energy is equal to minus 10 joules. That means the energy of this system, energy of the system is decreasing. बात सही है हाँ या ना? ठीक है. अब आप इसके अलावा कोई भी, बहुत बेसिक एग्जांपल है, ठीक है, like this happens on its own. You don't have to, I mean, there is no human interference when this is happening. This is completely natural process. Each and every natural process happens only and only, not only and only. One of the reason is the energy of system decreases. Energy of the system decreases. ये आपको दिखता हुआ समझ में आ गया हाँ या ना? ठीक है. अब दूसरी चीज देखते हैं. We will take another example. And in that also, na, it happens naturally. It does not require any human interference. Let us suppose I have isolated system यहाँ पे, ठीक है? ये system isolated है. Here there is no exchange of heat. System से बाहर कुछ heat नहीं, system के अंदर भी कोई heat नहीं जाएगा, ठीक है? There is no exchange of heat inside. There is no exchange of heat in the system. And here I have kept a block of iron, which is having a temperature, let us suppose 100 degrees Celsius. And in contact there is another block of iron which is having temperature 0 degrees Celsius. Which is having temperature how much? 0 degree Celsius. So this is inside the system. ये आपका सिस्टम है, ठीक है ना? ये आपका सिस्टम है. सिस्टम के अंदर ये दोनों ब्लॉक हैं, यानी कि whatever energy is there inside the system, वो एनर्जी बाहर नहीं जाने वाली. You guys will tell me after a very long time. इसको हम ब्लॉक ए बोल देते हैं, इसको हम ब्लॉक बी बोल देते हैं. What will happen? Temperature, option A, of A will increase and B will increase. क्या ये होगा? Option B, temperature of A will decrease and B will decrease. क्या ये होगा? Third, temperature of A will increase and B will decrease. क्या ये होगा? और temperature of block A will decrease and block B will increase. Which of the option? Tell me guys. खुद से बताइए, लॉजिकली बताइए. दो, एक गर्म है एक ठंडा है, आपने दोनों चीज को सटा दिया तो बहुत देर के बाद क्या होगा? गर्म वाली चीज क्या हो जाएगी और ठंडी वाली चीज क्या हो जाएगी? Which option? Tell me guys. A B C D 1 2 3 4 में चैट में बताइए, चैट में. Yes, Siddika correct, Mariam correct, very good. Martin, Abdul Hamid, Harsha, can you please apply something and tell me? बहुत आसान सवाल है ये तो. अच्छा, दूसरी चीज, it will happen automatically. हाँ, does it require any human intervention? क्या इंसान की जरूरत है यहाँ पे? नहीं है. So this is a natural process. ठीक है. हर्षा फिर से देखिए जरा, ऑप्शन देखिए. So you are saying B will, the temperature of B will decrease.
अगर कोई, इफ दिस इज हॉट एंड दिस इज कोल्ड, तो हीट विल फ्लो फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, तो हॉट का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम, और कोल्ड वाले का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ज्यादा, है ना? करेक्ट। तो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। हर्षा समझ में आया आपको, नहीं समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। नाउ दिस इज अनदर थिंग, इसको हम बोलते हैं, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। एक सेकंड जरा रुके, आई जस्ट, वो वर्ड दिमाग से निकल गया मेरे। There is a good word, हाँ, dispersion of energy. Dispersion of energy. एनर्जी लोकेट एक जगह लोकलाइज नहीं रहना चाहता है। अगर एनर्जी एक जगह लोकलाइज रहना चाहता, then this 100 degree Celsius block would not have given the heat to the bee. एनर्जी क्या होना चाहता है, एनर्जी वांट टू गेट डिस्पर्स्ड। सही है, बात सही है ना? ठीक है, तो दो ही चीज होती हैं, आइदर सिस्टम की एनर्जी, आइदर क्या होगा, सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज करेगी और एनर्जी का डिस्पर्जन होगा। एनर्जी का क्या होगा, डिस्पर्जन होगा, है ना? नेचुरली सिर्फ दो ही चीज हो सकती है, आइदर द सिस्टम्स एनर्जी विल डिक्रीज और एनर्जी का डिस्पर्जन होगा, और दूसरी चीज क्या हो सकती है, एनर्जी का डिस्पर्जन। अब ये बात बताओ ना, क्या आप कभी भी, ये 100 डिग्री सेल्सियस है, दिस इज 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। अब अगर हम केल्विन में जाए, ठीक है, 0 से समझ में नहीं आता बच्चों को, ठीक है, ये देखिए आप 373 केल्विन और ये 273 केल्विन, ठीक है, हमेशा नेचुरली व्हाट विल हैपन, हीट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन। सही है? ऐसा क्यों नहीं होता कि हीट उल्टे डायरेक्शन में चला जाए? दैट इज अननेचुरल प्रोसेस ना, अगर ऐसा हो जाए। बात सही है? अगर हम आपको कोई ऐसा चीज दिखाएं, जैसे यहाँ पे पहले टेम्परेचर था, मान लीजिए लेट अस सपोज यहाँ टेम्परेचर था 373, ठीक है, हमने आपको एक वीडियो दिखाया जहां पे टेम्परेचर लगा हुआ था, यहाँ पे दिया हुआ टेम्परेचर मान लीजिए कितना, 50 डिग्री सेल्सियस इनिशियली था, ठीक है, और यहाँ पे इनिशियली भी था 50 डिग्री सेल्सियस, कितना था, 50 डिग्री सेल्सियस, आई एम जस्ट वेट अ सेकंड, 50 डिग्री, चलो 50 डिग्री सेल्सियस, चलो ठीक, 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इनिशियली कितना था, 50 और 50, और फिर धीरे धीरे हमें अपने वीडियो दिखाया, आपको हमने वीडियो दिखाया, ये 50 से बढ़ के 100 हो गया, और ये 50 से घट के 0 डिग्री हो गया, ठीक है। अगर आप वीडियो देखिएगा तो आप बोलिएगा तो वीडियो रिवर्स करके दिखाया जा रहा है, और समझ में, वीडियो क्या हो रहा है, वीडियो को थोड़ा खुद से समझिए, एक्चुअली होना क्या चाहिए, 100 डिग्री था, थोड़ा बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे ऑल ऑफ यू गाइस प्लीज सी, 100 डिग्री सेल्सियस 1 ब्लॉक, 0 डिग्री सेल्सियस 1 ब्लॉक, ठीक है ना। नेचुरल प्रोसेस क्या है कि 100 घट के 50 हो जाए और 0 बढ़ के 50 हो जाए, कभी भी 50 से 100 तो नहीं होगा ना, और 50 से 0 नहीं होगा। इफ आई एम नॉट गिविंग एनर्जी, तब तो ऐसा चेंज पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। तो आप क्या बोलिएगा, यू विल से सर आप वीडियो उल्टा करके दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, वीडियो, है ना, ऐसी तो बोलिएगा, रिवर्स करके दिखा रहे हैं। तो आपको यहां से एक चीज पता लगेगी, दिस डिस्पर्जन ऑफ एनर्जी, डिस्पर्जन ऑफ एनर्जी को अगर आपने छेड़खानी की, इफ यू आर डिस्टर्बिंग द डिस्पर्जन ऑफ एनर्जी, देन यू आर ऑल्सो डिस्टर्बिंग द एस्पेक्ट ऑफ टाइम। टाइम ही तो था ना, रिवर्स करने का मतलब क्या, टाइम का एक डायरेक्शन है, आपने उसको उल्टा दिखा दिया, कैन यू सी दैट? तो अब यही एनर्जी, वीडियो है ना आपके पास, एनर्जी डिस्पर्जन, ये वर्ड, दिस इज नोन एज एंट्रोपी इन साइंस। इसको क्या बोलते हैं, एंट्रोपी। क्या बोलते हैं इसको, एंट्रोपी, ठीक है। अब आपके स्कूल में इवन इन एनसीईआरटी दे विल से दैट एंट्रोपी क्या है, तो बड़ा ही वाहियात डेफिनेशन सबने लिखा हुआ है, एंट्रोपी इज द रैंडमनेस,
रैंडमनेस। डिड यू अंडरस्टैंड एनीथिंग? हम बोल रहे हैं, हम एक सेंटेंस बोल रहे हैं, एंट्रोपी इज द measure of randomness। कुछ समझ में आया? अगर हम बोले एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस, कुछ समझ में आया सिद्दीका, मरियम, मार्टिन? कुछ नेचुरल लगा आपको कि कोई नेचुरल चीज हो रही है, लॉजिकल चीज हो रही है? नहीं। लेकिन ये देखिए आप, ये सेम चीज है बिल्कुल, ये इट्स नथिंग। 100 डिग्री सेल्सियस से हीट का ट्रांसफर 0 डिग्री सेल्सियस की तरफ, एनर्जी का डिस्पर्जन, नेचुरल लॉजिकल लगा। ठीक है, तो आप लोग लिखने के लिए देखिए, एनर्जी डिस्पर्जन मत बताइए किसी को, बोलेगा पता नहीं कहां से आ गया है। ठीक है, क्योंकि लाइक योर टीचर्स आर आल्सो बॉन्डेड, ना बाउंडेड है ना, बॉन्डेड नहीं है, केमिकल बॉन्ड नहीं है उनमें, बट दे आर बाउंडेड, बाउंड्री है उनके पास। वो आपको ये डेफिनेशन लिखाएंगे, और आपके अगर एग्जाम में आया कि एंट्रोपी क्या है, तो आपको यही डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस। लेकिन आपको अब देखिए, ये रैंडमनेस वर्ड, आई वुड नॉट से दैट ये गलत है, बट एटलीस्ट 11th स्टैंडर्ड के बच्चे के समझने के लिए चीज नहीं है। आई वुड, इतना तो हम जरूर कहेंगे कि इतना साल जो भी थोड़ा मोड़ा एक्सपीरियंस है हमको, उससे हम यही कहेंगे। और जो मेरे साथ खुद हुआ था, लाइक ये टॉपिक क्या ही टॉपिक था, ये बताओ कि किसी 11th क्लास के बच्चे को बता दे आदमी एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस, बच्चा क्या ही समझेगा। इसी वजह से फिर केमिस्ट्री को क्या पढ़ती है, गालियां, है ना, रट्टा मारो सब्जेक्ट, क्या करते नहीं करते कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे पास क्या हो सकती है, दो ही चीजें हमें जरूरत है। एनर्जी को मेजर करने के लिए तो हमारे पास एंथैल्पी था। एंट्रोपी को मेजर करने के लिए हमारे पास एनर्जी डिस्पर्जन को, दूसरी एस्पेक्ट जो है लाइक व्हाई एनीथिंग हैपेंस। अब हमारे पास दो आंसर है ना इसके। अब सुनिए जरा, थोड़ा और हम लोग आगे लेके चलते हैं, ठीक है ना। सिद्दीका पूरा बोर हो रही है, सिद्दीका पूरा बोर हो रही है। अब तो कौन डिस्टर्ब कर रहा है आपको? सिद्दीका, किसको पढ़ना है एंट्रोपी? There is someone who wants to study entropy with Siddhika. चलिए यहाँ पे देखिए, ध्यान से सुनिएगा all of you guys. If you remember the first class, this was our universe. सही है? इसके अंदर we had system, and then we had surrounding. अच्छा, यूनिवर्स के बाहर तो कुछ नहीं है। Can I say that? यूनिवर्स के बाहर do we have anything? यूनिवर्स के बाहर तो कुछ नहीं होगा। Can I say universe is isolated system? यूनिवर्स जो है हमारे पास, यूनिवर्स इज आइसोलेटेड, मतलब वॉट एवर एनर्जी इज प्रेजेंट इन द यूनिवर्स, वो तो उतनी रहेगी ना। यूनिवर्स से बाहर ना एनर्जी जाने वाली, ना ही यूनिवर्स के अंदर एनर्जी आने वाली। ठीक है, तो यूनिवर्स की एनर्जी, एनर्जी ऑफ यूनिवर्स कम हो गई, ये स्टेटमेंट बोलना तो गलत हो जाएगा, राइट? मेक सेंस ना, बिकॉज द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। तो यूनिवर्स के अंदर एनर्जी क्या होगी? एनर्जी डिक्रीज कभी हो ही नहीं सकती, जो एनर्जी वही रहेगा। एनर्जी का सिर्फ क्या हो सकता है तब इन यूनिवर्स? एनर्जी कैन ओनली डिस्पर्स। एनर्जी का क्या होगा? सिर्फ डिस्पर्जन। तो जब से दुनिया, अरे अब समझो तो, क्या पढ़ रहे हो आप, समझो थोड़ा। द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, और जब से ये कायनात बनी है तब से एनर्जी का क्या हो रहा है? डिस्पर्जन हो रहा है। एनर्जी इज गेटिंग डिस्पर्स्ड एंड इट इज स्टिल गेटिंग डिस्पर्स्ड। कब तक डिस्पर्स होता रहेगा? आप ये बात को समझो जरा। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम, वही मेरा फेवरेट एग्जांपल बिल्कुल, कि आपने दो ब्लॉक आयरन लिया, ठीक है, एक का 100 डिग्री सेल्सियस, दूसरे का 0 डिग्री सेल्सियस। ट्रांसफर होगा, दे विल रीच एन इक्विलिब्रियम। अब ये समझो, अभी आप लोग कहां पे, इफ यू आर टॉकिंग, यार ध्यान समझो, बिल्कुल ध्यान समझिए। सुनिए आप, दुनिया बनी, कायनात, यूनिवर्स वाज फॉर्म, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। धीरे धीरे द एनर्जी इज गेटिंग डिस्पर्स्ड, अभी हम लोग इस फेज में है। एनर्जी क्या हो रही है? डिस्पर्स हो रही है। कब तक डिस्पर्स होते रहेगी?
जब तक ये दोनों क्या ना हो जाए 50 डिग्री सेल्सियस और ये भी 50 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद दुनिया खत्म। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ठीक है, तो आपने अभी छोटे से टाइम के अंदर फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स से लेके कहां तक पढ़ लिया? एंड ऑफ यूनिवर्स। क्या आपको अंदाजा था केमिस्ट्री में आपको एंड ऑफ यूनिवर्स बताया जाएगा? वी आर इन दिस फेज। कुछ नहीं है जिंदगी, आप देख रहे हैं क्या है, 100 डिग्री से 50 डिग्री तक का सफर है, बस छोटा सा सफर, दैट इज इट। उसी में आपके मसले, क्या मसले? आपके कुछ मसले नहीं, ठीक है। सो इन द होल, लाइक पूरे उस प्रोसेस में आप समझो ना, दुनिया है और दुनिया नहीं है, वहां पे आप कहां लाई कर रहे हो और आपके प्रॉब्लम्स कहां लाई कर रहे हो। हैव दिस, आप ये ग्रैंडर इवेंट में चलो ना। अब आप सिर्फ ना उस इसमें रहो यार, बस यही हो रहा है। 100 डिग्री से 50 डिग्री तक का सफर है पूरे दुनिया लाइक, अब जब सब कुछ खत्म हो जाए, when the complete thing is reached equilibrium, when there is no transfer of heat, जब एनर्जी का ट्रांसफर ही नहीं होगा, then nothing will happen in the universe, nothing will happen, है ना भाई? आप यहां समझो ना, 50 डिग्री सेल्सियस 50 डिग्री सेल्सियस, both have reached 50 डिग्री सेल्सियस, will anything happen after that? Nothing will happen. When each and every molecule of the universe will have same energy, at that time the complete universe is gone. ठीक है, चलिए। अब आप लोगों ने कितनी बड़ी बात, 11th क्लास के बच्चे इतनी बड़ी बड़ी बातें समझ ली। कोई भी चीज क्यों होती है वो आपने समझा, why anything happens in the universe। कुछ भी चीज अगर होगी ना in the universe, if anything happen, it will happen only if the energy is dispersing। आपका एंट्रोपी, इसी को क्या बोलते हैं, dispersion of energy is entropy। So in the universe anything will happen only if the entropy is increasing। एंट्रोपी क्या होनी चाहिए, एनर्जी का डिस्पर्जन बढ़ना चाहिए। इन यूनिवर्स एनीथिंग हैपेंस, व्हाई? इट हैपेंस बिकॉज द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीजेस। अब आपने जब यहां तक बात समझ ली है, तो अब आपका लिखने की बारी आ चुकी है, ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं जो कुछ समझा है उसके बारे में। सबसे पहला, एक तो नेचुरल जो प्रोसेस हम कह रहे हैं ना, जिसमें ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं होता है, सो दैट इज नोन एज स्पॉन्टेनिटी, राइट? Spontaneity. You will write a spontaneous person, process. A spontaneous is an irreversible गलत स्पेलिंग हो गया, irreversible process and may only be reversed by some external agency। अब एक जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको लिख लीजिएगा। स्पॉन्टेनियस डज नॉट मीन फास्ट। ठीक है, जनरली जब स्पॉन्टेनियस वर्ड का यूज होता है नॉर्मल इंग्लिश में, क्या स्पॉन्टेनियसली जवाब देता है यार, मतलब इट इज व्हाट, बिना किसी हिचकिचाहट के, राइट? फास्ट, right? But in chemistry it does not, spontaneous does not mean fast। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाए ना, even in the normal language the word that we use ना, क्या like how he is very spontaneous, ठीक है? तो spontaneous का मतलब ना फास्ट नहीं होगा, it would be effortless। अगर आप सोचे इंग्लिश के टर्म्स में भी, लाइक ही इज वेरी स्पॉन्टेनियस बाय नेचर, कि वो जवाब देता है बहुत आसानी से, है ना? कुछ भी बोलो जो तुरंत जवाब दे,
तो उसका मतलब फास्ट नहीं, इट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट मीनिंग वुड बी एफर्टलेस देना। तो यहाँ पे भी वही है ना, दैट इट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड वी ओनली बाय रिवर्स बाय सम एक्सटर्नल एजेंसी। तो आप स्पॉन्टेनिटी को, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को एफर्टलेस के दायरे पे रखिएगा, नॉट एज फास्ट। इट इज ऑब्वियसली नॉट व्हाट, इट डज नॉट मीन फास्ट। ठीक है, अब दिस इज व्हाट स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या हुआ। स्पॉन्टेनियस का मतलब वही चीज हो गई जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, व्हाई एनीथिंग हैपेंस, एनीथिंग, एक जो भी नेचुरल प्रोसेस है वो क्यों होते हैं, एंड व्हाट इज द क्राइटेरिया। अभी हम लोगों ने समझा था इस बात को, क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्या है भाई क्राइटेरिया, अभी हम लोगों ने समझा था, यूनिवर्स के अंदर कोई चीज हो रही है, देन इट विल ओनली हैपन बिकॉज द एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज डिस्पर्सिंग, दैट मींस एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स शुड इंक्रीज। एक ही क्राइटेरिया है इसका, क्या, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स should increase. Entropy of universe should increase. That is the only criteria. क्योंकि यूनिवर्स की एनर्जी तो कम नहीं हो सकती, देयर आर ओनली टू थिंग्स। अगर हम लोकली बात करें इनसाइड द यूनिवर्स, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एनी सिस्टम, देन इन दैट केस द एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैन बी लोवर्ड, बट सिंस यूनिवर्स इज इटसेल्फ आइसोलेटेड, तो उसकी एनर्जी तो कम नहीं हो सकती, इसकी एनर्जी सिर्फ क्या हो सकती है, डिस्पर्स हो सकती है, and that dispersion of energy is entropy. That is why I say the only criteria for spontaneous process in the universe is what the entropy of universe should be increasing. अब यहीं से हम लोग लिख सकते हैं कि like what is entropy. अगर आपने क्राइटेरिया में बताया कि entropy of universe should increase, then what is entropy? So let us now talk about entropy. There is a movie called Tenet. Has anyone watched Tenet? समझ में आया था मार्टिन? We have to understand. Yeah. उसमें ये था, एंट्रोपी था, भूल भी गया आप लगता है देखने के बाद। So in that they were talking about the reversal of time, right? याद है? तो it is completely related with entropy only. क्या आपने क्या किया, there were things जिनकी एंट्रोपी को रिवर्स कर दिया गया, तो वो बस ऐसी चीजें थी, like they did not actually tell how they have done. वो ऐसी चीजें थी जिसमें क्या हो रहा है, 100 डिग्री सेल्सियस है, अरे भाई ये मेरा एग्जांपल आपको बहुत मिलेगा, ठीक है ना, तो आप लोग बोर मत होइएगा। तो नेचुरली हमारे लाइक राइट नाउ नॉर्मली क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस ऐसे हीट का फ्लो होगा, है ना, बट जिनकी एंट्रोपी रिवर्स कर दी गई है उनमें हीट का फ्लो ऐसे होगा। ठीक है, तो सारी चीजें उसमें जो है ना उल्टी उल्टी होके आ रही है। तो गन जो है ना बुलेट को शूट नहीं करता है, उसमें बुलेट गेट्स इनसाइड द गन। अगर गन की और बुलेट के स्पेस आप सोचें, है ना, तो क्या होगा, नॉर्मली बुलेट इज फायर्ड बाय द गन, लेकिन अगर उसकी एंट्रोपी को रिवर्स कर दिया जाए, देन व्हाट विल हैपन, देन द बुलेट विल बी कमिंग इनसाइड। ठीक है, तो उसमें हमारे पास बस उल्टी उल्टी चीजें हो रही। चलिए, एंट्रोपी लिखिएगा, व्हाट इज एंट्रोपी, प्लीज राइट, मेजर ऑफ, ये हमारा डेफिनेशन है, ये आपके टीचर्स के पास नहीं आना चाहिए। मेजर ऑफ एनर्जी डिस्पर्जल in an isolated system. ये आपके पास जो डेफिनेशन है ये जाएगा आपके आंसर शीट्स में। व्हाट इज एंट्रोपी, इफ दे आस्क यू इन योर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन और यूनिट टेस्ट और टर्म बोर्ड एग्जामिनेशन, बोर्ड नहीं फाइनल एग्जामिनेशन, देन यू विल राइट मेजर ऑफ randomness of a system। ठीक है, चलें ना, as we have written, like अभी हम हमारा मेन तो मकसद, like the big picture for this lecture is what, why anything happens,
एनीथिंग हैपेंस ओनली व्हेन द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग। अगर एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीज नहीं कर रही है तो व्हाट विल दैट प्रोसेस विल नेवर हैपन, वो प्रोसेस होगा ही नहीं। ठीक है, ध्यान रखिए। सो इफ आई टॉक अबाउट डेल्टा एस, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, then entropy of the universe will be nothing but will be the sum of entropy of surrounding plus the entropy of system। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डेल्टा एस टोटल भी बोल सकते हैं, डेल्टा एस टोटल। अच्छा, एंट्रोपी को एस से डिनोट किया जाता है, ये हमें शायद लिखाया नहीं है आप लोगों को। डेल्टा एस ऑफ सिस्टम विच विल बी इक्वल टू डेल्टा एस टोटल, है ना। यहाँ एंट्रोपी को ना एस से आप लोग कर लीजिए, एंट्रोपी इज एस, तो चेंज इन एंट्रोपी विल बी डेल्टा एस। ठीक है, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऑब्वियसली एंट्रोपी शुड इंक्रीज, तो डेल्टा एस टोटल जो होना चाहिए आपका दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी कि डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग एंड द डेल्टा एस ऑफ सिस्टम should be greater than 0, है ना। it should be positive, the entropy change should be positive। अरे आप एक बात बताइए, मरियम, सिद्दीका, मार्टिन, हर्षा, अब्दुल हमीद, all of you are agreeing with this particular line ना। यही लाइन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है क्राइटेरिया कुछ भी होने का। all of you agree with this ना, ठीक है, इसमें तो दिक्कत नहीं किसी को। बिल्कुल एकदम ऐसा विश्वास होना चाहिए जैसे न्यूटन का लॉ है ना, न्यूटन का लॉ है ना, क्या है, फर्स्ट लॉ, थर्ड, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, वैसा है ना, बिल्कुल एतमाद इस पे। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स शुड इंक्रीज इफ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज हैपनिंग, यू शुड हैव दैट मच क्लैरिटी हियर। चलिए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्या होना चाहिए, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग व्हेन सिस्टम विल बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसको लिखिए, फिर हम आपको एक चीज समझाएंगे। इसको लिखिए जरा, write it quickly, let me know once you're done। Siddiqa is done, waiting for Abdul Hamid, Martin and Mariam. Harsha and Abdullah, you all please tell me once you're done। Just Abdullah generally नहीं जाता है क्लास में, ठीक है। You guys can lower your hand now, ठीक है, you guys can lower your hand। देखिए यहाँ पे आई एम टेकिंग 2 केसेस। ए केस में आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कर लिया आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम, एंड हियर यू हैव अ ब्लॉक जिसके अंदर गैस है, ठीक है, इसके अंदर गैस है, और हियर द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर है बताइए गाइस, 0 डिग्री, ठीक है। आई विल हीट दिस, आप इसको हीट देंगे, एंड यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कोई दिक्कत, अगर आप हीट करेंगे तो ऑब्वियसली टेम्परेचर विल इंक्रीज। दूसरा सिनेरियो है आपके पास, हियर द गैस एटम्स आर हियर, और ये गैस एटम्स ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा इनके अंदर एनर्जी है, they are having temperature that is 1000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसमें भी आपने सेम अमाउंट ऑफ हीट दिया, सो व्हाट विल हैपन, द टेम्परेचर विल इंक्रीज फ्रॉम 1000 टू 1100 डिग्री सेल्सियस, सही है, ठीक है। लेकिन आप एक बात बताओ, वेयर विल यू सी मोर इफेक्ट, लाइक ज्यादा डिस्पर्जन, डिस्पर्जन समझिए ना, 0 डिग्री सेल्सियस सॉलिड स्टेट, थोड़े सोचिएगा, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब
सॉलिड स्टेट, अगर आप पानी की बात कर ले, वाटर की बात कर ले, सॉलिड स्टेट, इफ यू आर हीटिंग इट टू 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या बन जाएगा, वेपर। सही है। कैन यू सी द एनर्जी डिस्पर्सन? पहले एनर्जी इतने छोटे से एरिया में लोकलाइज थी, all the energy, like whatever energy was present inside the system, it was only till here because the molecules itself were only here. Now can you see there is a huge increase in the, like अब ये molecules के अंदर ही तो energy है ना, and these molecules are dispersed greatly. So can we say that in this particular case the delta S is higher? अब यहाँ पे क्या ही चेंज होगा? If I go from 1000 degree Celsius to 1100, is there any significant change? यहाँ पे गैस का क्या ही रहेगा, गैस रहेगा. So if I talk about the dispersion in this particular case from going from lower temperature to like very low temperature to high 100 degrees Celsius, the entropy or the dispersion of energy is much greater than in the case of temperature when it is higher. तो यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही होगी, if we are having delta S, then it is inversely proportional to the temperature of the system. अगर temperature of the system कम है तो उसके अंदर एंट्रोपी के चांसेस ज्यादा है, द चेंज इन एंट्रोपी विल बी लार्जर इफ द, वैसे आप एक और चीज समझो, ठीक है. हियर वी हैव 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे आपके पास 90 डिग्री सेल्सियस, कितना हीट फ्लो होगा इधर? और अगर आपके पास इस तरह से हो, हाँ एक सेकेंड मर गया, 100 डिग्री सेल्सियस एंड हियर वी हैव 0 डिग्री सेल्सियस, कहाँ पे हीट फ्लो ज्यादा होगा, ए केस में या बी केस में, बताइए. हीट का फ्लो ज्यादा कहां पे होगा? बी. दिख रहा है ना सबको कि यहां से यहां ज्यादा हीट फ्लो होगा. मेक सेंस? सिद्दीका, मार्टिन, अब्दुल हमीद, हर्षा, है ना? ठीक है. सो ऑब्वियसली देखिए 0 डिग्री सेल्सियस, दैट मींस आई कैन से ना एंट्रोपी, लाइक देयर इज एनर्जी डिस्पर्जन किसमें ज्यादा है, 1/T, यानी कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेंपरेचर, जितना टेंपरेचर कम होगा उतना ज्यादा एंट्रोपी होगा. व्हाट इट इज ऑन ऑफिशियल मी ऑल ऑफ यू गाइस. ठीक है. अब सुनिए जरा दूसरी चीज, अगर हमने हीट ही ज्यादा दे दिया तब भी एंट्रोपी ज्यादा होगा. इफ आई एम गिविंग मोर हीट तब भी डिस्पर्जल क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना? तब भी डिस्पर्जल, इफ यू कंपेयर 0 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस में क्या डिस्पर्जन होगा, सॉलिड लोकलाइज्ड, देन इट विल मूव टू लिक्विड. ठीक है. देयर इज अ स्मॉल चेंज इन द डिस्पर्जन ऑफ एनर्जी, बट इफ आई गो फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हीट आपने ज्यादा दिया, इफ यू आर गिविंग मोर हीट, then you will go from solid to gas. Gas obviously it will be having a larger dispersion. That means I can say delta S is also directly proportional to Q. बात सही है. अब यहां से आपके पास क्या आ गया है, डेल्टा S का फॉर्मूला आ गया. So what is delta S? Delta S it is equal to, अब एक चीज आपको हम कहेंगे जो आपको याद आनी चाहिए सेकंड या फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास से फ्लॉट हमने पढ़ा था, आई थिंक सेकंड या थर्ड क्लास में होगी ये चीज. maximum work is done in a reversible process. ठीक है. We are using this term because whatever heat we want to give in the system, जब we are talking about entropy, that heat we measure as reversible heat because we want to give the maximum energy. So Q reversible divided by T. This is the formula for entropy. I hope you understood 1/T क्यों है, Q reversible, Q क्यों है, and reversible because we want to give the maximum amount of work. लिख लिया सबने? हाँ ना, जल्दी बताएं. ऑल ऑफ यू डन राइटिंग? ठीक. अब आ जाते हैं आखिरी चीज के अंदर हम लोग, दैट इज
एक तो हम लोगों ने बात की देयर आर ओनली टू केसेस, या तो आप एंथैल्पी, सिस्टम की एंथैल्पी को डिक्रीज कीजिए, और व्हाट यू कैन डू, यू कैन इंक्रीज द एंट्रोपी, है ना। या तो आप सिस्टम की एंथैल्पी को क्या कीजिए, डिक्रीज कीजिए, या फिर आप एंट्रोपी को क्या कीजिए, इंक्रीज कीजिए, देन ओनली एनी प्रोसेस विल हैपन। नाउ वी वांट अ जनरल फॉर्मूला जो कि इन दोनों को क्या करता हो, एकोमोडेट करता हो, which accommodates both of these things in order to comment। अब बाद में सब चीज के लिए अब हम लोग एंट्रोपी और एंथैल्पी को लेके चलेंगे दोनों को। सो व्हेन वी आर गोइंग टू ऐड बोथ ऑफ दीज थिंग, तो ये समझिए यहां पे इसकी यूनिट तो होगी जूल्स, और डेल्टा एस इट इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई टी। तो डेल्टा एस की यूनिट जो आएगी वो क्या आएगी, जूल पर केल्विन आएगी। So there is a mismatch of unit. That is why rather than taking delta S, when we assemble both of these delta H and delta S, we take this as, इन दोनों को मिलाने के बाद we take that delta G, that is the Gibbs free energy, it is equal to delta H जो कि जूल्स में होगा, and if I just rewrite this equation as T delta S, ठीक है। तो अब ये पर्टिकुलर जो आपके पास T delta S है, this will be also what, this will be in terms of what, this is Q, ये जूल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। So just to have the consistency of unit, we write the overall question why anything or when if anything will happen or not, that is answered by delta H, which takes into the consideration the enthalpy change as well as the entropy change for a process। अब जो आपके पास ये गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी जो है, it has taken into consideration energy वाला एस्पेक्ट भी, एंट्रोपी वाला एस्पेक्ट भी। और डेल्टा जी इज समथिंग व्हिच विल टेल कि आपके पास कोई भी चीज लाइक इफ एनी प्रोसेस विल हैपन और नॉट हैपन, और इसी को बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। राइट हियर गिब्स फ्री एनर्जी। ओके, ध्यान से देखिए, गिब्स फ्री एनर्जी इट इज गिवन बाय जी। इफ आई जस्ट टॉक अबाउट जी ना, G will be equal to entropy minus TS, sorry, enthalpy minus TS। अब यहां पे आपके पास प्लस T डेल्टा S कैसे आया उसके बारे में समझ लीजिए। If I talk about change in Gibbs free energy, this will be equal to delta H, ठीक है, एंथैल्पी का चेंज, माइनस डेल्टा TS भी हो सकता है, माइनस T डेल्टा S, बिकॉज हियर वी आर हैविंग टू टर्म्स, ठीक है। नाउ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, if I take temperature as constant, at constant temperature, we will have delta G, delta T will be equal to 0, तो ये टर्म पूरा चला गया, delta G will be equal to delta H minus T delta S minus T delta S। Please write this down, Gibbs free energy। Sir, why did you write delta TS twice? यहाँ पे this one, No, below that. Delta G is equal to delta H minus delta TS. this one here, H Yeah. minus TS, this one, see here, this is energy, Gibbs free energy, ठीक है। Yes. ठीक है, ध्यान सुनिएगा इस बात को जरा, H minus TS कहां से आया, and this enthalpy is also directly what, it is also directly energy, ठीक है। Now if a change will happen, like whatever effect this particular energy is having, ठीक है, जो भी आपके पास ये एंथैल्पी का इफेक्ट होगा, इट विल बी पॉजिटिवली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जी। जो आपके पास एनर्जी है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द गिब्स फ्री एनर्जी। जो भी एंथैल्पी चेंज हो रहा है, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। थोड़ा ध्यान से यहाँ पे सुनिए, व्हाट इज हैपनिंग व्हेन द एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग, 100 डिग्री सेल्सियस अगर एंट्रोपी इंक्रीज करेगी तो आपके पास ओवरऑल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, Yes. ठीक है। दैट इज वाई वी हैव टेकन अ नेगेटिव साइन हियर टू शो दैट
if I talk about this particular term, that is Ts, it is not directly proportional to D, directly proportional to G, rather it is inversely proportional to G. यानी कि अगर ये चीज बढ़ेगी तो G की वैल्यू कम होगी. As you can see, if the entropy is increasing, the overall value of energy, that means अगर ये 50 डिग्री सेल्सियस हो गया, ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई है? डिक्रीज हो गई है ना, एनर्जी डिक्रीज करेगी. इफ एंट्रोपी इज इंक्रीजिंग, एनर्जी इज डिक्रीजिंग. ये बात समझ में आई आपको? Yes. ठीक है. तो यहाँ पे जो हमने ये प्लस लिखा था ना, वो माय मीनिंग वाज नॉट एक्चुअली लाइक ये प्लस करना, बट इन दोनों का कॉम्बिनेशन अब हम लोग को देखना. ठीक है, वी हैव टू सी द कॉम्बिनेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ डेल्टा एच एंड टी डेल्टा एस. ठीक है, चलिए यहाँ पे हो गया, सबने लिख लिया? ऑल ऑफ यू डन? आफ्टर दिस यू विल राइट स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड डेल्टा जी. Spontaneous process and delta G. एक चीज जो हम लोगों ने बताया था, in spontaneous process, in a spontaneous process जो हमारे पास क्राइटेरिया आया था मैथमेटिकल टर्म में, that was delta S total will be greater than 0. सही है? And delta S total is nothing but it is the sum of system, delta S of system and surrounding. Delta S of surrounding. अब यहां पे आपके पास ना एक बहुत ही खास बात है, इसको आपको समझनी पड़ेगी. समझिए जरा यहां पे. इतना लिखने के बाद ना, मार्टिन प्लीज स्टॉप राइटिंग आफ्टर दिस. यहां तक लिखने के बाद सिद्दीका, हर्षा, अब्दुल हमीद, ऑल ऑफ यू ध्यान से समझिएगा जरा. ठीक है ना? यहाँ पे चलिए देखिए, दिस इज योर सिस्टम और ये है आपके पास सराउंडिंग. सिस्टम एंड सराउंडिंग. ठीक है, हमने कहा सिस्टम ने एनर्जी दी, सिस्टम हैज गिवन आउट एनर्जी. एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ था, सिस्टम ने एनर्जी दी. तो अगर हम एंथैल्पी की बात करें, डेल्टा एच ऑफ द सिस्टम, सिंस इट इज गिविंग आउट एनर्जी, मान लीजिए 20 जूल एनर्जी दी, तो -20 जूल. सही है? कोई दिक्कत किसी को? नो प्रॉब्लम. ठीक है. अच्छा, सराउंडिंग ने क्या किया? एनर्जी को एब्जॉर्ब किया. इफ आई विल टॉक अबाउट द चेंज इन द एंथैल्पी ऑफ सराउंडिंग, इट विल बी इक्वल टू +20 जूल. बात समझ में आई सबको? हाँ या ना? ठीक है. अच्छा, +20 जूल को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? माइनस ऑफ -20 जूल. कैन आई राइट इट लाइक दिस? अच्छा, ऐसे लिखने का मतलब क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? इट इज नेगेटिव ऑफ द डेल्टा एच ऑफ सिस्टम. दिस इज -20 जूल. क्या था? डेल्टा एच ऑफ सिस्टम. सही है? सो आई कैन राइट डेल्टा एच ऑफ सराउंडिंग. अगर आपने नजर हटी, दुर्घटना घटी वाला हाल होगा यहाँ पे, अगर आपने ध्यान से नहीं देखा तो. प्लीज हियर गाइस. मरियम, यहां तक समझ में आया आपको? आई थिंक यू वर विथ मी. Yes, sir. ठीक है, अब ध्यान से सुनिए जरा. आपने देखा था डेल्टा एस जो होता है, दैट वाज इक्वल टू क्यू. अब्दुल हमीद कहाँ आना जाना कर रहे हैं आप? क्यू डिवाइड बाई टी. और वही अगर हम सराउंडिंग के भी बारे में बात करें तो इट विल बी क्यू डिवाइडेड बाई टी. बात सही है? अब ये बताओ, सिस्टम का जो क्यू था, इट वाज नथिंग. द सिस्टम क्यू वाज, इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा एच. ये जो सराउंडिंग है ना, सराउंडिंग का क्यू था, क्या था? डेल्टा एच ऑफ सिस्टम डिवाइड बाई टी. ठीक है, तो क्या हम एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग को इससे रिप्लेस कर सकते हैं? फायदा क्या हुआ इस चीज का? आई डोंट हैव टू मेजर. हमको दो जगह डिवाइस लगाने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ सिस्टम में डिवाइस लगाएंगे एंड वी विल नो द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम एज वेल एज द एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग. भी कहां से निकल रहा है? आपको सिस्टम से निकल जा रहा है. ठीक है, तो ये फायदा हमारे पास. प्लीज देखिए ध्यान से. तो सिस्टम को तो सिस्टम रहने दिया हमने. सी एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, इट इज इक्वल टू सिस्टम ओनली. एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस यू विल राइट व्हाट इज एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग. इट इज नथिंग, नेगेटिव ऑफ द एंथैल्पी ऑफ सिस्टम divided by temperature.
किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो बताएं। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, यहां देखिए अब दिस इज डेल्टा एस टोटल। इफ आई मल्टीप्लाई द टेम्परेचर इन ऑल ऑफ दीज टर्म्स, ठीक है, अगर हम टेम्परेचर को मल्टीप्लाई करते हैं, और रादर इफ आई मल्टीप्लाई नेगेटिव ऑफ टेम्परेचर, तो यहां पर लिख सकते हैं माइनस टी डेल्टा एस टोटल विल बी इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस सिस्टम। माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा ये, और टी से टी कट जाएगा, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी डेल्टा एच ऑफ सिस्टम। इतना बच गया, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए जरा, माइनस ऑफ टी डेल्टा एस टोटल विल बी इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ सिस्टम माइनस टी डेल्टा एस ऑफ सिस्टम। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर आपको याद हो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इट इज नथिंग बट डेल्टा जी। याद आया, देखो सही है, विच विल बी इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस टोटल। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए डेल्टा जी के बारे में। फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, डेल्टा एस टोटल क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर कैन नेवर बी नेगेटिव। इससे किसी को परेशानी, देयरफॉर टेम्परेचर ऑल्सो पॉजिटिव। टेम्परेचर नेगेटिव होता है, अच्छा -5 डिग्री सेल्सियस तो होता है, तो टेम्परेचर नेगेटिव होता है क्या? सोचो अब जरा, नहीं होता नेगेटिव। क्यों नहीं नेगेटिव होता है? टेम्परेचर नेगेटिव नहीं होता, ये यूनिट की गलती है। ये किसकी गलती है? ये किसकी गलती बताइए? यूनिट की गलती है, ठीक है ना। आप एक बात बताओ, क्या डिस्टेंस नेगेटिव होता है? कैन डिस्टेंस एवर बी नेगेटिव? नहीं ना। लेकिन मान लो कोई आदमी था, मान लो ब्रिटिश का बहुत राज था ना, जब वो बोलता लंदन इज द 0 पॉइंट। लंदन क्या है? यहां पे उसने बोल दिया लंदन, लंदन को बोल दिया उसने 0, मान लो क्या बोल दिया? 0। लंदन के आगे जाएंगे तो पॉजिटिव डिस्टेंस होगा, लंदन के पीछे जाएंगे तो नेगेटिव डिस्टेंस होगा। तब तो डिस्टेंस नेगेटिव हो जाता, होता ना। जैसे टाइम सोचो ना, सऊदी का टाइमिंग क्या है? इट इज +2.5, है ना। और अगर लंदन के इस तरफ जाएं आप लोग, तो वहां पे नेगेटिव में टाइमिंग चलता है। सो ऑब्वियसली टाइमिंग इज नॉट नेगेटिव, वो आपका रेफरेंस का गलती है। तो उसी तरह से सिमिलरली टेम्परेचर, एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन नेवर बी नेगेटिव इफ यू कैन मेजर समथिंग। अगर आप सोचो ना भाई, अगर आप किसी चीज को मेजर कर रहे हो तो नेगेटिव कैसे हो, है ना। समझिए यहाँ पे, तो टेम्परेचर हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। सो दिस टर्म इज ऑल्सो पॉजिटिव, टी टर्म इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो ये पूरा टर्म हमेशा नेगेटिव नहीं रहेगा। अगर आप टी की जगह कोई पॉजिटिव नंबर ले लो 2, डेल्टा की जगह ले लो पॉजिटिव नंबर 2, 2 टू 4, -4 हो गया, है ना। देयरफॉर माइनस ऑफ टी डेल्टा एस टोटल विल बी नेगेटिव फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। Therefore, delta G for spontaneous process is negative, यानी उसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी। एंड डेल्टा G for non-spontaneous process is positive। इतनी बात समझ में आई तो बताएं। हाँ जी, सबको समझ में आया टिल हियर? चलिए प्लीज कॉपी दिस डाउन। अब आप लोगों का एक क्लास लगेगा, दैट विल बी ओनली फॉर न्यूमेरिकल्स। आप लोग प्लीज होमवर्क कर लीजिएगा, यू विल हैव अ ग्रेट लेंथ ऑफ टाइम ना अब तो।
आपके पास 5 दिन है, यू हैव मेनी होमवर्क, बहुत होमवर्क रिमेनिंग है, ठीक है। सारे होमवर्क आप लोग कर लीजिएगा उसमें से, फिर वी विल डिस्कस जहां पे भी आपको डाउट्स आए, ठीक है। Krishna, hello, am I audible, Krishna? Yes, sir. Should I call you Krishna or Priya? What should I call you? Sir, it's one word. It's Krishna Priya. So I should call you both the words. Yeah, but yeah, it's okay. You can call me Krishna. I will call you Krishna. We'll start in a while, okay? Okay. You are in 12th standard or 11th standard? I'm in grade 12 right now. Grade 12. वो पढ़ा था आपने 11th में? By the way, where are you from originally? Right now, I'm in the Kingdom of Saudi Arabia, but in India, I'm from Kerala. You're from Kerala. Okay, fine. Which school do you go to in Saudi? In Saudi, IIS Dammam. It's an embassy school. Yeah, I understand. Indian International School, no? International Indian School, the mom. Yeah. Yes. यहाँ पे कोई है दमाम से? अब्दुल हमीद, मार्टिन तो नहीं है खैर। मार्टिन, यू आर फ्रॉम यूएई ना? यू आर इन दुबई राइट Yeah, नाउ। yes. मरियम? No, sir. I'm in Riyadh. रियाज? सिद्दीका? Sir, I'm also an IIS Dammam. हाँ, ये देखिए आपकी जूनियर है बैठी हुई, सिद्दीका। वो कौन सी क्लास में है? 11 11F. अच्छा, आपने क्या स्ट्रीम लिया था? लिया था क्या? लिया है, साइंस पढ़ रही है। और अच्छा, अभी पढ़ रही है। हाँ, आप कौन सी स्ट्रीम में? बायोमैथ्स। सबको ऑल द बेस्ट बोलें कृष्ण प्रिया को। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बायोमैथ्स लिया है इन्होंने। बायोमैथ्स क्यों लिया आपने? Biomaths is if NEET did not work out, JEE. ऑप्शंस है वहां पे, है ना? Yes, we kept the options open. What are you more interested in, by the way? अच्छा, नीट ही more interested ना, because obviously पहले आप बोलिए अगर नीट नहीं हुआ तब। Yeah, I'm trying for NEET first, and then if not, then JEE. नीट requires speed, like बहुत speed चाहिए नीट के लिए, that is the only thing. And right now the ranks this year, it has gone like too far. Like people who were above 600 also, they were also worried, like whether they will get their favorite medical college or not. Even the people with more than 600 were not safe this time. We'll try our best. Yeah, what we can do, we can only try our best. Yeah, Yeah. you will get the need. Like I mainly teach for CBSE board examination, and you will have another teacher, and he specializes in the NEET examination. So he will be teaching you. See, theory part I do like almost cover in my classes, but NEET, it requires a different set of questions to practice. Like it is very different from how you write answers for the board examination. So I mainly focus on, like, that's the only difference I would say in NEET and boards. Otherwise, syllabus is almost the same for both of them. There's a little bit, like if you complete boards and practice questions for a NEET examination, one can crack the NEET examination easily, because not all the questions are to be attempted.
Hope you know that in NEET examination, there are a few questions Yes, yes. that you have to leave, that are present there only to leave for the majority of the student, obviously. Chaliye, everyone done? Yes or no, please tell me. Mariam, Yes. Siddiqa, Yes, sir. yes. Yeah. So I'm ending this class right now. We will Sir? do the numericals. Yeah, tell me. I haven't had my turn in the practical yet. Could you have a class tomorrow and just explain to me the cations and anions? Cations and anions. At what time, tell Yes. me? Anytime is okay for me, sir. Achha, tomorrow you don't have school. I do have school, sir, but after 2 Saudi time. That will be difficult for me because I am not available. Sir, I See, can do any time this week. I can do it any time this week. My next practical will be next no, week. you tell me what day you are not going to school, because see, as soon as I am busy. If I talk about your time now, so I'm busy from 12 noon KSA, and after that I have classes, and then I get free around. I have some like half an hour gaps are there, but those gaps are for me. Those gaps are not for students. I Yes, have to sir. pray, I have to eat, and all of those things. Now, so 12 noon KSA, then I don't have any free time. You can say that it is almost 8 p.m. KSA. I think right now it is 8 p.m. in KSA, na? Yes, sir. Yeah. So like almost this whole time I am busy. There are obviously there are Sir, some. then I'll inform you when I'm not going to school the night before. I'll inform you when I'm not going to school then the night before, and then you can take class before 12. Yeah, sure. That can happen for sure. इस तरह से हम लोग एक्स्ट्रा क्लासेस कर रहे थे ना, Yes, sir. है ना, उस टाइम पे चलेगा. Yes, sir. It's okay. ठीक है, आप बताइएगा आप नहीं कब नहीं जा रहे हैं, फिर हम लोग कर लेंगे. ठीक है, Okay, sir. चलिए ठीक है. Thank you, sir. Goodbye. Thank you. Bye bye. Take care. Thank you guys. Thank you very much. Take care. 17th of September. This is Sunday. Okay. So, Krishna, what is happening in your school right now? Right now, we are doing coordination compounds.